Now we will enter into electric field. A very important thing, electric field for ODI medium students. This is Vidyut Khetra. Okay, so what is electric field? Now, if this is a charged body, then आर चारिपटे if another charge को मु place करिबी, then this charge will experience a force. Attractive है पारे, repulsive है पारे, but this charge will experience a force. So आमे कहू this charge रा चारिपटे electric field develop है कि थिला. That electric field भितरे any other charge यदि आसे निश्चित भावे charge उपरे force develop होगा. So electric field को class 10th रे भी define कराई थिला. एमिति आमे define करि परिबा. Electric field of a charge is the space around that charge. से charge चारिपटे थिबा space in which another charge can experience an electric force on it. सही स्पेस भितर आमे जदि किछि गोटे चार्ज को प्लेस करिबा सही चार्ज ऊपर किछि ना किछि फोर्स डेवलप हबो. So if a charge is placed inside an electric field, then a force develop on the charge. Now strength of electric field kete, strength of electric field or intensity of electric field kete. Now any point re strength of electric field by intensity of electric field is equal to force acting on a unit charge, unit positive charge placed at that point. Any point re, look at this point re field kete mu janiya chahunchi. So this point re gote unit positive charge place karibi, unit positive charge upre jaha force develop haba, this point re strength of electric field or intensity of electric field ko ame setiki kahibu jara symbol hochi capital E and E vector bhi ame likhi pariba, because electric field is a force, so electric field is also a vector quantity. So again I am repeating, strength of electric field at any point is the electric force developed on a unit positive charge placed at that point. Let आम पाखरे unit positive charge नाही, but test charge नाही. Test charge कौन ना unit positive charge को test charge कह जाउची. कहीं ना गोटे पॉइंट रो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ए सब जानिबा पई हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यूज करूछु. सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें टेस्ट चार्ज कहू. सो व्हाट हैपेंस इफ हम पाखरे टेस्ट चार्ज अवेलेबल अछि, हम एनी पॉइंट रो इलेक्ट्रिक फील्ड जानिया पई सही पॉइंट रे टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दबा, केते फोर्स पडुची कैलकुलेट करबा बा ऑब्जर्व करबा बा एक्सपेरिमेंटली मेजर करबा. दैट फोर्स विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. If हम पाखरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज नाही, Q चार्ज इज अवेलेबल, तो आमे कोन करिबा सही पॉइंट रे Q चार्ज को प्लेस करिबा. Q चार्ज को प्लेस कले ता ऊपर F टा माने करो F वेक्टर हला, ता ऊपर फोर्स टा माने करो F वेक्टर हला. ताहले Q चार्ज पे फोर्स टा जदी F वेक्टर हबो, यूनिट चार्ज पे फोर्स टा how much हबो F वेक्टर by Q. So this is equal to electric field. We develop a formula E vector is equal to F vector by Q. Always our पाखरे टेस्ट चार्ज थिबो बोली किछ माने नाही, एनी चार्ज थाई पारे. So any point रो strength of electric field by intensity of electric field जानिया पे हमें सही पॉइंट रे चार्ज टा को प्लेस करिबा, फोर्स टा केते फाइंड करिबा. फोर्स टा को जदी F वेक्टर रे रखिबा ताहले चार्ज टा हबो Q and electric field is represented by E vector, which is given as E vector is equal to F vector by Q. Now electric field ro direction कौन हबो along F vector. E vector is equal to F vector by Q माने electric field रो direction कौन हबो निश्चित भावे along F vector हबो. So आमे जदी electric field रो direction देखबा को चाहिबा, एठी गोटे आमे point positive charge नेबा. पॉइंट पॉजिटिव चार्ज नेले इलेक्ट्रिक आ जो इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन कुआडे हबो. लुक एट जोठी भी मु जदी गोटे टेस्ट चार्ज को प्लेस करिवि, दैट टेस्ट चार्ज रे को ये रिपेल करबो ना नहीं.
सो इफ यही लाइन रे जो भी गोटे मो टेस्ट चार्ज को प्लेस करी से टेस्ट चार्ज टा दिस पॉजिटिव चार्ज रा से टेस्ट चार्ज को रिपेल करिबो ना नहीं सिमिलरली यही लाइन रे भी दिस पॉजिटिव चार्ज रा से टेस्ट चार्ज को रिपेल करिबो ना नहीं सिमिलरली यही लाइन रे भी दिस पॉजिटिव चार्ज रा से टेस्ट चार्ज को रिपेल करिबो ना नहीं सो एमती जोठी भी प्लेस कले टेस्ट चार्ज उपरे दिस पॉजिटिव चार्ज रो फोर्स टा एमती हबो सो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रिक फील्ड एमती हबो व्हिच इज कॉल्ड एज स्फेरिकली आउटवर्ड बिकॉज ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज रो चारि पटे एटा सिना बोर्ड ऊपर प्लेन टा स्पेस रे भागो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज अछि माने ऑल डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हबो सो स्फीयर भले इलेक्ट्रिक फील्ड लागिबो and it moves outward so spherically outward आने कहला similarly if you take a negative charge here then any point रे गोटे टेस्ट चार्ज प्लेस कले टेस्ट चार्ज ऊपर फोर्स टा एमिति हबो एनी पॉइंट रे हम टेस्ट चार्ज प्लेस कले टेस्ट चार्ज ऊपर फोर्स उडा सब एमिति पड़िबो सो आमे कोन कहिबा ना हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली इनवर्ड for point positive charge it is spherically outward for point negative charge it is spherically inward okay now there is a question of finding unit and dimensions of E vector unit of E vector को हमें कौन लिखि परिबा look at unit of E vector very simple F रो unit होची न्यूटन Q रो unit होची कूलम so unit of E vector is equal to or electric field strength is equal to Newton per coulomb dimensions कौन हबो न्यूटन रो dimensions force रो dimensions हमें जानि छे mlt-2 by coulomb Q रो dimension Q is equal to IT so coulomb Q रो dimensions I by A and time by capital T so this is equal to mlt-3 A-1 unit and dimensions of electric field okay now look at a सब conclusion ru कौन पाइले ना if a charge q is placed in an electric field then a force develops on that charge let us find how much will be that force look at E vector is equal to F vector by Q means what is the formula developing F vector is equal to Q into E vector so very interesting here this point the conclusion is if a charge q is present in an electric field E vector then force on the charge is given by F vector is equal to Q E vector look at to this diagram let this is an electric field vector E vector this electric field every point electric field E vector now any point charge q जदि place करिवि ताले this q charge ऊपर force develop होबो जो force is given by F vector is equal to q into E vector so कौन conclusion होची force रो magnitude is equal to QE and force रो direction होची along E vector यदि जाना पड़छि बट एठी गोटे पॉइंट मन रखि थाओ q टा जदि पॉजिटिव होबो ताहले F vector is along E vector now if q टा नेगेटिव हबो एठी जदि माइनस पुट करबी q जदि नेगेटिव हबो एठी जदि माइनस वैल्यू रे पुट करबी ताले F vector along E vector होची ना along माइनस E vector होची so F vector along minus E vector हबो जेतेले माइनस साइन टा पड़िबो एंड वेक्टर क्वांटिटी रे माइनस साइन पड़ला माने इससे भी डायरेक्शन अपोजिट को बुझौची अगेन क्लास 11 रो वेक्टर को मने पकाओ वेक्टर क्वांटिटी माइनस हला माने डायरेक्शन अपोजिट को बुझौची सो लुक एट पॉजिटिव चार्ज ऊपर फोर्स टा F vector is equal to QE हला बेले नेगेटिव चार्ज ऊपर फोर्स टा F vector is equal to minus QE vector हबो so difference कौन both case रे force रो magnitude same रहिला but direction टा opposite हला so conclusion है
पॉजिटिव चार्ज ऊपर फोर्स टा अलोंग फील्ड बट इफ गोटे नेगेटिव चार्ज को आम फील्ड भितर प्लेस करवा नेगेटिव चार्ज ऊपर फोर्स टा विल बी अपोजिट टू द फील्ड very important concept मन रख if a positive charge q is placed in an electric field then electric force on the charge is given by F vector is equal to QE vector and if this charge will be negative F vector is equal to minus QE vector मतलब force ର direction opposite होगा so very important thing positive charge ऊपर electric force टा along field negative charge ऊपर electric force टा opposite to field okay now pause the video and write the note. 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 So look at very important thing. Direction of electric field away from positive charge and towards negative charge आसुची ये भी गोटे कन्क्लूजन वेरी इंपोर्टेंट एटी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होची एटी गोटे नेगेटिव चार्ज नि आइची इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होची दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट आगो नाउ आमे डिस्कशन करबा स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज लेट एटी गोटे पॉइंट अछि एटी गोटे पॉइंट अछि q पॉइंट चार्ज q दिस पॉइंट चार्ज जोगु आर दूर रे गोटे पॉइंट अछि सेठी इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज ओके तो लेट पॉइंट चार्ज रा प्रेजेंट अछि पॉइंट ए रे and we want to find electric field at point B okay so look at जो पॉइंट रे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करियो चाहूचे सही पॉइंट रे हमें चार्ज q को प्लेस करिबा सही पॉइंट रे जदी हमें चार्ज q को प्लेस करिबा फोर्स केते हबो F वेक्टर इज इक्वल केते हबो बीटा कैपिटल Q एठी कोन चार्ज प्लेस करते स्मॉल q बाय डिस्टेंस रो स्क्वायर r स्क्वायर कूलम्स फार्मूला पकली डायरेक्शन क्वाड हबो दिस पॉइंट रे जो पॉजिटिव चार्ज रे प्लेस कली कैपिटल Q बा A चार्ज ताको रिपेल करबो सो फोर्स टा क्वाड हबो अलोंग AB हबो सो डायरेक्शन क्वाड हबो F वेक्टर रो अलोंग AB हबो also just बुझाइथिली फोर्स रो डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव होची फील्ड रो डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव होची सो F वेक्टर इज इक्वल टू बीटा कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर अलोंग AB हला सो दिस पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड माने कोन F वेक्टर बाय Q को चार्ज कैपिटल Q ना स्मॉल q दिस पॉइंट रे जोटा पुट करा जाइथिला दिस पॉइंट रे कोन पुट करा जाइथिला स्मॉल q पुट करा जाइथिला सो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू केते हबो दिस पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर माने एतिकी बाय स्मॉल q सो कोन आसिला बीटा q बाय r स्क्वायर डायरेक्शन कोड आसिला अलोंग AB so very important conclusion point charge q ठारू r दूर रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो बीटा q by r square and direction हबो away from positive charge along AB if एटा नेगेटिव चार्ज हितांता माइनस q हितांता फील्ड रो मैग्नीट्यूड सही बीटा q by r square हितांता बट डायरेक्शन ऑपोजिट हितांता along BA हितांता बट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हितांता बुझी परला ना ए सब वेरी इंपोर्टेंट आगो को एंट्रेंस दियो कि +3 पढ़ो कि इंजीनियरिंग पढ़ो सब बेले फंडामेंटल गुडा को वेरी इंपोर्टेंट आ जेमिति को फंडामेंटल गुडा कहूची सेमिति अप्लाई होबो कोठी जदी तमे देखुचो मो कहिथिबा स्टेटमेंट चेंज होची तार तमे भाबो निश्चित भाबे तमे गोटे भूल रास्ता रे जाउछो ओके नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट द नोट नाउ
किछि न्यूमेरिकल्स आसीबो जमिति नेट फोर्स फाइंड करथिले सेमिति नेट फील्ड फाइंड करिबारे भी किछि न्यूमेरिकल्स आसीबो सही वेक्टर एडिशन कांसेप्ट ही लागिबो जहाँ किछि न्यूमेरिकल्स आमे भी फील्ड ऊपर डिस्कशन करिबा सब गुडाकर वेक्टर कांसेप्ट ही लागिबो सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन हेले एवरी क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करिवो तापर सॉल्यूशन को देखियो जिवो सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन टू चार्ज 10 coulomb and minus 20 coulomb are placed at a distance of 4 meter from each other. Find field at the center of line joining them. Okay, so pause the question and find the answer. Okay, आंसर बाहरला जो मानकर आंसर 67.5 into 10 to the power 9 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स -20 कूलम आसिला से मानकर आंसर होची ठीक नाउ लुक एट क्वेश्चन टा केमिति हबो कोन अछि ना 2 पॉइंट चार्ज 10 कूलम एंड -20 कूलम किछि डिस्टेंस एपार्ट अछंती केते डिस्टेंस एपार्ट अछंती 4 मीटर एपार्ट अछंती सेही मानकर सेंटर रे गोटे पॉइंट रे लेट p इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच 10 कूलम टा को चार्ज a रखो -20 कूलम टा को चार्ज b रखो बा पॉइंट b रखो सेंटर पॉइंट टा p नियो एंड सेंटर पॉइंट रे हाउ मच विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी सिंपल पॉइंट p रे 10 कूलम गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करिवो -20 कूलम गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करिवो लेट 10 कूलम जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करछि ताको मु EA वेक्टर लिखिबी जेहेतु 10 कूलम टा पॉइंट ए रे अछि सो 10 कूलम डेवलप करथो फील्ड को मु EA वेक्टर नेली सो फार्मूला इट अछि q चार्ज ठारू r दूर रे फील्ड होछि बीटा q बाय r स्क्वायर अवे फ्रॉम पॉजिटिव सो EA इज इक्वल केता हो p पॉइंट फील्ड माने बीटा q माने 10 कूलम जेहेतु EA फाइंड करछि a चार्ज पकेबे 10 कूलम बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर तो पूरा डिस्टेंस टा 4 मीटर थिला p जदि मिड पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डिस्टेंस केता थिला 2 मीटर आछिला सो 2 रो स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा 10 बाय 4 इज इक्वल टू 2.5 बीटा डायरेक्शन क्वाडे 10 कूलम जो को फील्ड क्वाड हबा अवे फ्रॉम पॉजिटिव माने डायरेक्शन हबा अलोंग AP which वर्चा नाउ सिमिलरली -20 कूलम जो को p पॉइंट रे फील्ड को जदी EB वेक्टर नेबी EB वेक्टर जो केता हबो बीटा इनटू 20 -20 पकेबा दरकार नै कारण -20 टा हम डायरेक्शन रे लगेबी ओके सो वेक्टर क्वांटिटी गुडा करे प्लस माइनस का डायरेक्शन को इंडिकेट करूची तेणु ए गुडा को भितरे प्लस माइनस लगेबनी जदि किछि स्केलर क्वांटिटी लिखुछ ताले प्लस माइनस लिखिबो छाड़िबनी वेक्टर क्वांटिटी रे प्लस माइनस टा जे डायरेक्शन देखुची मैग्नीट्यूड लिखिला बेला प्लस माइनस लिखुनी डायरेक्शन टा उल्टा कर दबा सो बीटा q बाय r स्क्वायर माने अगेन से 2 रो स्क्वायर 4 तो 5 इज इक्वल टू 5 बीटा हला डायरेक्शन क्वाड हबो नाउ लुक एट -20 कूलम जो फील्ड बाहर करछि सो नेगेटिव चार्ज जो फील्ड टा क्वाड हबो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हबो ना नहीं काहे ना p पॉइंट जदी गोटे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में प्लेस करबी ए नेगेटिव चार्ज रा p पॉइंट रो चार्ज को निजाडू अट्रैक्ट करबो ना नहीं सो अलोंग pb होछि अलोंग pb सो p पॉइंट रे दीटा फील्ड डेवलप हला गोटे 2.5 बीटा अलोंग AP आ गोटे 5 बीटा अलोंग PB नाउ EA वेक्टर आ EB वेक्टर सेम डायरेक्शन हला अपोजिट डायरेक्शन हले क्लियरली जाना पड़छि गोटे होछि अलोंग AP आ गोटे होछि अलोंग PB सो बोथ सेम डायरेक्शन हला नहीं सो जेहेतु बोथ आर इन सेम डायरेक्शन सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कला बेले कोन करबा सिंपली मानकर मैग्नीट्यूड गुडा को ऐड कर देबा मैग्नीट्यूड ऐड करले गोटे 2.5 बीटा गोटे 5 बीटा माने 7.5 बीटा बीटा माने 9 into 10 to the power 9 ओके एंड डायरेक्शन क्वाड हला बोथ अलोंग AP PB अछि सो डायरेक्शन हबो अलोंग AB that is towards -20 coulomb charge so this is
67.5 into 10 to the power 9 SI units Newton by Coulomb along AB or towards minus 20 Coulomb charge. Okay? Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Now another question, 2-point charge 10 Coulomb and 20 Coulomb are placed at a distance of 3 meters from each other. Locate the point of zero field. देखो पिला माने ये क्वेश्चन टा exactly similar to a question Coulomb's law में discussions करथिली. Find a point where net force 0. So ये क्वेश्चन टा जेमिति ही थिला, ये क्वेश्चन टा भी exactly सेमिति हबो, केवल सेठी force रो फॉर्मूला यूज ही थिला, एठी field रो फॉर्मूला यूज हबो. So pause the video, try the question. Pause the video and write the solution. Now another interesting question, two charges 10 Coulomb and minus 20 Coulomb are placed at points 30 and 04 on coordinate axis, x-axis, y-axis. Find net field at origin. So according to question, x-axis, y-axis और origin draw करवा दरकार. Origin, x-axis, y-axis दीटा पॉइंट कथा उठे 30. So 30 पॉइंट एठी हबो 30. Let this point को A नेली. Another point उठे 04 एठी हबो. Let point P नेली 04. And 30 point रे 10 Coulomb charge place अछि. And 04 by B point रे minus 20 Coulomb charge place अछि. And origin O रे electric field पचरेला. So कौन करिबा जेमिति आमे करि आछे इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन रे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A डेवलप हबो ड्यू टू चार्ज B डेवलप हबो मैग्नीट्यूड फाइंड करिबा डायरेक्शन फाइंड करिबा देन नेट टा फाइंड करिबा. So let origin रे चार्ज A जोगु फील्ड टा को मु EA वेक्टर लिखिबी. So formula कौन हबो बीटा क्यू बाय आर स्क्वायर. क्यू माने हो 10 Coulomb, बीटा 10 by r square means 3 रो स्क्वायर that is 9 SI units. डायरेक्शन कोड हबो जेहेतु एटा पॉजिटिव चार्ज एटा फील्ड रो डायरेक्शन टा कोड हबो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज हबो. सो अलोंग AO हबो. सो अलोंग AO हला. Similarly origin O रे चार्ज B जो फील्ड को जदि EB वेक्टर लिखिबी EB वेक्टर जो कोन हबो बीटा इनटू इट -20 लिखिबा कि कहिछि मु वेक्टर क्वांटिटी गुडा को फाइंड कला बेले माइनस टा डायरेक्शन को बुझाइबो तनो माइनस लिखिबनी. बट स्केलर क्वांटिटी कोन फाइंड कला बेले जदि माइनस चार्ज अछि माने माइनस पुट करिवो. वेक्टर क्वांटिटी कोन फाइंड कला बेले माइनस जगह माइनस पुट करिवनी. माइनस रो मीनिंग टा डायरेक्शन आडे बुझौछि. तनो एठी चार्ज जगह 20 पकेली बाय r स्क्वायर एठी डिस्टेंस टा हो 4 r स्क्वायर माने 16 एंड डायरेक्शन टा एठी कोन हबो ना एटा हो नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज माने ओरिजिन रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कला बेले एठी जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट करथिबी ताकू दिस -20 Coulomb अट्रैक्ट करबो. सो अट्रैक्ट कले फोर्स टा कोडे डेवलप होछि अलोंग OB डेवलप होछि. बुझबाला ना नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बाहर करिया पे दिटा वे कहिथिली गोटे वे जोठी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करछे सेठी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस करो. से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऊपर जो डायरेक्शन रे फोर्स डेवलप हबो फील्ड रो डायरेक्शन भी सही पटे हबो. आ गोटे कहिथिली ना सोर्स चार्ज रे जदी पॉजिटिव अवे फ्रॉम पॉजिटिव हबो सोर्स चार्ज रे जदी नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिव हबो. दिटा वर्ड आछि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज. फील्ड क्रिएट करथवा चार्ज रा हम सोर्स चार्ज कहूछु. फील्ड जानिया पे जो चार्ज रा हम यूज करछु ताको टेस्ट चार्ज कहूछु. सो हियर -20 Coulomb इज द सोर्स चार्ज नेगेटिव. सो टुवर्ड्स नेगेटिव हबो अलोंग OB हबो. सो दिस इज अलोंग OB. नाउ नेट फाइंड करबा. नेट फाइंड करिया माने देखो EA हला अलोंग AO
ई बी है along ओ बी परपेंडिकुलर है सो से गुडा मैं देखिए दूची ई एटा है एमिति ई ए एंड ई बी है along ओ बी माने एमिति सो ई ए आउ ई बी जदि एमिति है नेट फील्ड इज इक्वल टू केते हबो ऑलरेडी हम डिस्कशन करछे रूट ओवर ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर फील्ड रो मैग्नीट्यूड पचारिछि फील्ड रो मैग्नीट्यूड पई हमें फाइंड करि परिबा E इज इक्वल टू रूट ओवर E स्क्वायर प्लस E B स्क्वायर आल्सो फील्ड रो डायरेक्शन पचारिछि डायरेक्शन पई कोन करिबा ना एमिति E A और एमिति E B अछि माने नेट E टा निश्चित भाबे एमिति हबो सो नेट E टा लेट आ सहित अल्फा एंगल करूछि तो दिस अल्फा एंगल फाइंड करिया पई यूज करबा tan अल्फा इज इक्वल टू b बाय a जेहेतु 90 डिग्री अछि b जगह अछि e b a जगह अछि e a सो tan अल्फा इज इक्वल टू e b बाय e a नाउ वैल्यू पके कि सिंपलीफाई करिकरी अल्फा फाइंड करि परबो सेटा डायरेक्शन को देखेबो ओके एंड जहा एंगल आसिला एटा कोन अछि वेस्ट आड़ को अच्छी एटा नॉर्थ आड़ को अच्छी सो अल्फा जति एंगल आसिला सेति बा अल्फा डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट को हम ए सब भी क्लास 11 रा वेक्टर डायरेक्शन जाको को आइछि ओके जदि तुम ऐसे सब लैंग्वेज जानि परनो एमदी फिगर करिकि देखैकिरी tan अल्फा इज इक्वल लिख देले भी चलबो ओके नाउ पॉज द वीडियो एंड राइट द नोट नाउ पॉज द वीडियो and write the note. Next another question asuchi two charges each 10 coulomb are placed at two vertices of an equilateral triangle of side having length 1 meter. Find electric field at third vertex. Very simple question. Equilateral triangle रो तीनटा पॉइंट भितरु दीटा पॉइंट रे दीटा चार्ज अछि थर्ड पॉइंट रे फील्ड पचारछि सो आज को फील्ड फाइंड करिवो ताज को फील्ड फाइंड करिवो नेट फाइंड करिवो एमिति का केस गोटा में फोर्स रे करिथिली सो निजे करिवो सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन नाउ लुक एट द सॉल्यूशन निजे कोन भूल करथिलो कंपेयर करो एंड सॉल्यूशन देखिकिरी आंसर लिखो पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर नाउ डिस्कस ए सिचुएशन Four identical charges are placed at four corners of a rectangle. This is a rectangle. Let name is given by A, B, C, D. Four identical charges are placed at four corners of an equilateral triangle. Find field at center. Rectangle रो center कोन two diagonal रो point of intersection. Two diagonal रो point of intersection होची rectangle रो center. Okay. Now this center रे how much is the electric field? Find करो. Center O रे. So now look at charge A, B, C, D all will develop field at there. Let charge A जो field टा जोटा develop होची ताको मु E A vector लिखिबी E A vector जो कोन हबो बीटा Q by R square माने A O रो square direction कोन हबो एटा positive charge away from positive so along A O similarly EB vector कोन हबो EB vector is equal to similarly beta Q by B O रो square हबो direction कोन हबो along B O similarly C जो center रे electric field EC vector कोन हबो beta सेठी भी charge Q by C O रो square direction कोन हबो आ जो field find direction find करछि तो एटा होची q दिस चार्ज जो फील्ड डायरेक्शन रा कोन हबो अवे फ्रॉम पॉजिटिव ओके जेहेतु एटा पॉजिटिव चार्ज दिस पॉजिटिव चार्ज जो ओ रे फील्ड डायरेक्शन कोन हबो अलोंग co नाउ सिमिलरली चार्ज d जो सेंटर ओ रे फील्ड को जदी ed वेक्टर लिखिबी
ताहले बीटा क्यू बाय डी ओ रो स्क्वायर एंड डायरेक्शन कौन हबो अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज दैट इज अलोंग डी ओ नाउ सेंटर ओ रे 4 चार्ज जो 4 फील्ड डेवलप हैला से गुडा को लिखि देली विथ डायरेक्शन we know rectangle ro AO is equal to OB is equal to OC is equal to OD now देखो बीटा क्यू बाय AO स्क्वायर BO स्क्वायर CO स्क्वायर DO स्क्वायर माने ऑल सेम आसिला जेतु एई लेंथ गुडा को सेम मैग्नीट्यूड ऑल रो सेम आसिला नाउ नेट फाइंड करबा को गला बेले कौन देखिबा वन अछि अलोंग AO अदर अछि अलोंग CO सो EA आउ EC इक्वल एंड ऑपोजिट हेले ठीक सेमती EB एंड ED भी इक्वल एंड ऑपोजिट हेले सो नेट फील्ड हैला 0 so if identical charges are placed at 4 corners of a rectangle then net field at center will be 0 now eta jodi square habo tebe भी net field 0 habo if eta regular pentagon habo regular pentagon माने all side रो length same तबे भी सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हबो ना एटा जदि ओटे रेगुलर हेक्सागन हबो 6 साइड ऑल साइड रो लेंथ सेम देन आल्सो सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हबो नाउ इफ एटा जदि इक्विलेटरल ट्रायंगल हबो ओटे इक्विलेटरल ट्रायंगल नै गिरी तीनटा वर्टेक्स रे जदि तीनटा आइडेंटिकल चार्ज प्लेस करली तबे भी सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हबो so any regular geometrical figure ro vertex गुडा करे identical charge जदि place करूची निश्चित भाव center रे electric field 0 हबो a very important concept आगु दरकार now pause the video and write the note now pause the video and write the note now pause the video and write the note now pause the video and write the note. Now listen a very important conclusion statement को मन देकी सुनो. If charge are uniformly distributed on the surface of a regular geometrical figure, then electric field at its center is equal to 0. Any regular geometrical figure उपरे चार्ज जदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होइछि निश्चित भाव सेंटर रे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हबो रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर को गुडाको सर्कल स्फीयर सिलिंडर रेक्टेंगल स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल देन regular hexagon all these are regular geometrical figures regular hexagon माने hexagon जरा all sides same regular pentagon माने pentagon 5 side थिबो all side same थिबो regular hexagon माने 6 side थिबो 6टा side थिबो every side रो length same थिबो similarly square को हमें कहि परिबा regular quadrilateral equilateral triangle को हमें कहि परिबा regular triangle एमिति any regular geometrical figure ऊपर चार्ज यदि uniformly distribute हेछि then center रे electric field निश्चित भावे 0 हबो uniformly distribution माने कोन ना look at one regular geometrical figure नेली circle let गोटे सर्कल उपरे चार्ज सब डिस्ट्रीब्यूट हेछि ओके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माने कोन ना जे कोनोसी पॉइंट रे इफ मु एल लेंथ रो सेक्शन टे बाहर करिबी देन एवरी सेक्शन रे अमाउंट ऑफ चार्ज सेम हबो then that is uniformly distribution circle ro small portion ne bi mane kon asbo length asbo if equal length ro small portion different part of circle ru neli if every small section bhitre present thiba charge ra same hobo then ame taku kahiba uniformly distributed similarly sphere ne bi sphere re charge ra surface upre distribute heichi
माने एरिया ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हेची सो इक्वल एरिया डिफरेंट पार्ट रु नेले एवरी पार्ट रे जदी चार्ज प्रेजेंट सेम रहइबो देन आमे ताको कहबो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर सो एमिति जदि चार्ज रा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हेची सेंटर रे निश्चित भाव इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हबो काहे लुक एट एठी जदि गोटे स्मॉल सेक्शन नेली ठीक आर अपोजिट रे एमिति का गोटे स्मॉल सेक्शन अछि नाउ दिस स्मॉल सेक्शन रे जहा चार्ज दिस स्मॉल section रे भी शेयर चार्ज because uniformly distributed. Now this small section टा center ऊपर electric field टा एमिति develop करिवो and this small section टा center ऊपर electric field एमिति develop करिवो so electric field गुडा को opposite होची now जेहेतु charge रो amount same and center रो small section रो distance टा भी same तेणु field गुडा को भी equal हवा ना नहीं so this small section और this small section जोगु center रे field equal and opposite हैला so net केते हैला 0 हैला similarly any small section लियो ठीक तार opposite रे गोटे small section मिलिबो से दुईटा small section जोगु center रे field टा equal and opposite हबो so net field at center 0 हबो so very important point any regular geometrical figure नियो ता ऊपर चार्ज जदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हेची तार सरफेस ऊपर बा लेंथ ऊपर तार सेंटर रे निश्चित भाबे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हबो very important concept now इठी गोटे क्वेश्चन देछि if 5 charges q are present at the 5 vertices of a regular hexagon then find field at the center कौन कहूची ना गोटे रेगुलर हेक्सागन रो 5 साइड रे 5 identical charges are present what is the field at center center कोटा ना all diagonals draw करबी all diagonals जो पॉइंट इंटरसेक्ट करिवे that is center so regular hexagon length L 5 point रे 5 charges are present so what will be the electric field at center very simple this charge और this charge रो field टा center रे equal and opposite हबो this charge and this charge रो field टा भी center रे equal and opposite हबो only this charge रो field टा center रे present हबो so if naming करिबी charge गुडा को point गुडा को ताहेले A और D रो field center रे equal and opposite है कि 0 हबो B and E रो net field भी 0 हबो center रे only C रो field टा center रे present रहइबो because F रे charge नाही so center रे net field केते हैला charge C जोगु center रे field जति खबो charge C जोगु center रे field केते हबो beta q by co square along co-direction रे एटा positive charge so away from positive charge हबो so along co हबो now how much is this CO look at this side is L now it is angle टा केते this angle केते this angle केते माने देख look at एठी एमिति 6 टी एंगल तयारी होची and all 6 टी एंगल रो amount is equal सब गुडा का मिसिले 360 डिग्री so each angle 60 डिग्री हला ना एठी clear टोटल एंगल ला 360 डिग्री 6 टा एंगल क्रिएट होची जेहेतु एई लेंथ गुडा को सब सेम एंड एई लेंथ गुडा को भी सेम ओके सो निश्चित भावे दिस एंगल 60 डिग्री हबो नाउ OA is equal to OB so these two angles same हबो now if this 60 degree ए दिटा मिसी के हबो 120 and same हला so एटा भी हबो 60 डिग्री और एटा भी हबो 60 डिग्री ओके सो OAB गुड इक्विलैटरल ट्रायंगल हला सो AB जदी L OAB L हबो
OB भी L हवा OC भी L हवा so this is equal to beta Q by L square along CO. Okay students, आज पाठपढ़ा एति नेक्स्ट चैप्टर गोटे नुआ एरिया आरंभ हम भल भाव पढ़ापढ़ी कर चैनल को सब्सक्राइब कर. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note.